Харе Кришна. Харе Кришна, Джай Рада Мадава Кунджа Бихари. Джай Рада Мадава Кунджа Бихари. Гопи Чанавалаба Гириварадари. Джая Гопи Чанавалаба Гириварадари. Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана. Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана. Ямуна Тира Ваначари. Ямуна Тира Ваначари. Джай Рада Мадава Кунджа Бихари. Джай Рада Мадава Кунджа Бихари. Гопи Чанавалаба Гириварадари. Джая Гопи Чанавалаба Гириварадари. Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана. Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана. Ямуна Тира Ваначари. Ямуна Тира Ваначари. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Shri Radha Radhika Raman ki jai, Shri Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadharma ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we are reading the first verses from Canto 10, Summum Bonum, chapter 41, Krishna and Balarama enters Mathura. तो आज हम पाठ कर रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 41 के प्रथम श्लोकों से, जिसका शीर्षक है कृष्ण तथा बलराम का मथुरा में प्रवेश. We are going to read verses from 2nd to 5th. तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 2 से 5. So I will read these verses myself, and then it will be read in Hindi. Yes. तो पहले मैं श्लोकों का उच्चारण करता हूँ, फिर इनको हिंदी में पढ़ेंगे. Supi chantar hitam vikshya chalat unmadja satvarach kritva chava shakam sarvam vismito radham agamat tam aprijha tri shikeshach kimte drisham ivadbhutam bhumao vyati toeva tathatvam lakshyamane.
Shri Akrura Uvacha Adbhuta Nina Yavanti Bhumau Vyati Vajale Твои Вишватмакетани Кимедришtam Vipashyatах Ятра Бхутани Сарвани Бхумау Vyati Vajale Там Твану Пашьято Брахман Кимедришtam Ихад Бхутам. Translations of the verses from 2nd to 5th. When Akrura saw this vision disappear, he came out of the water and quickly finished his various ritual duties. He then returned to the chariot, astonished. Lord Krishna asked Akrura, "Have you seen something wonderful on the earth, in the sky, or in the water? From your appearance we think you have." Shri Akrura said, "Whatever wonderful things the earth, sky, or water contain all exist in you. Since you encompass everything when I'm seeing you, what have I not seen? And now that I'm seeing you, O Supreme Absolute Truth, in whom reside all amazing things on the earth, in the sky, in the water, what amazing things could I see in this world?" जब अक्रूर ने इस दृश्य को अंतर्धान होते देखा तो वे जल के बाहर आ गए और उन्होंने जल्दी जल्दी अपने विविध अनुष्ठान कर्म संपन्न किए। तत्पश्चात वे विस्मित होकर अपने रथ पर लौट आए। भगवान कृष्ण ने अक्रूर से पूछा, क्या आपने पृथ्वी पर या आकाश में या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है? आपकी सूरत से हमें लगता है कि आपने देखी है। श्री अक्रूर ने कहा, पृथ्वी, आकाश या जल में जो भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे सभी आप में विद्यमान हैं। चूंकि आप हर वस्तु से ओतप्रोत हैं, अतः जब मैं आपका दर्शन कर रहा हूं तो फिर वह कौन सी वस्तु है जिसे मैंने नहीं देखा है? और अब जबकि हे परम सत्य, मैं आपको देख रहा हूं जिनमें पृथ्वी, आकाश तथा जल की सारी अद्भुत वस्तुएं निवास करती हैं, तो फिर भला मैं इस जगत में और कौन सी अद्भुत वस्तुएं देख सकता था? Hare Krishna. And of course we have to follow our prescription to read Sanskrit verse together. So let's show verse number 5 on the screen and let's read this verse together. Yatrad bhutani sarvani. Yatrad bhutani sarvani. Yatrad bhutani sarvani. Yatrad bhutani sarvani. Bhumau viyati vajale. Bhumau viyati vajale. Tam tvanu pashyato brahman. Tam tvanu pashyato brahman. Tam tvanu pashyato brahman. Tam tvanu pashyato brahman. Kim me drishtam ihadbhutam. Kim me drishtam ihadbhutam. Kim me drishtam ihadbhutam. Kim me drishtam ihadbhutam. Yatrad bhutani sarvani. Yatrad bhutani sarvani. Bhumau viyati vajale. Bhumau viyati vajale. Tam tvanu pashyato brahman. Kim me drishtam ihadbhutam. Kim me drishtam ihadbhutam. Yatrad bhutani sarvani. Yatrad bhutani sarvani. Bhumau viyati vajale. Tam tvanu pashyato brahman. Tam tvanu pashyato brahman. Kim me drishtam ihadbhutam. Kim me drishtam ihadbhutam. Please read. Who is going to read? Yatrad bhutani sarvani. Tam tvanu pashyato brahman. Kim me drishtam ihadbhutam. Yatrad bhutani sarvani. Bhumau vyati vajale. Tam tvanu pashyato brahman. Kim me drishtam ihadbhutam. Yatrad bhutani sarvani. Bhumau vyati vajale. Tam tvanu pashyato brahman.
Mataji's. यत्र भूतानि सर्वाणि पश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहाद्भुतम् यत्र भूतानि सर्वाणि भूमौ वेति वा जले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहाद्भुतम्. Okay, now we will be reading word by word translation. I will be reading Sanskrit, you read Hindi. Okay, we will do like this. Yatra जिसमें Adbhutani अद्भुत वस्तुएं Sarvani समस्त Bhumau पृथ्वी पर Viyati आकाश में Va अथवा Jale जल में Tam उस Tva तुमको Anupashyataha देखते हुए Brahman हे परम सत्य Kim क्या Me मेरे द्वारा Drishtam देखा गया Iha इस संसार में Adbhutam. आश्चर्यजनक. Again, we will read the translation of this word, of this verse. And now that I am seeing you, O Supreme Absolute Truth, in whom reside all amazing things on the earth, in the sky, and in the water, what amazing things could I see in this world? और अब जबकि हे परम सत्य मैं आपको देख रहा हूं जिनमें पृथ्वी आकाश तथा जल की सारी अद्भुत वस्तुएं निवास करती हैं, तो फिर भला मैं इस जगत में और कौन सी अद्भुत वस्तुएं देख सकता था. Purport. Akrura has now realized that Lord Krishna is not merely his nephew. तात्पर्य. अब अक्रूर को बोध हुआ कि कृष्ण उनके भतीजे मात्र नहीं हैं. That's all. That is the end of purport. तो तात्पर्य में बस इतना ही कहा गया है. Did you like this purport? क्या आपको ये तात्पर्य अच्छा लगा? Nice purport. बहुत Om अच्छा Agyana लगा. Timiranda Syaginan Jana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmaya Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Yena Bhutale Svarupa Kadama Yam Dadati Svapadantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sinubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. So it is called vichar, or perception of what is going on around us, and what kind of vichar or perception we will be having, it depends on association that we have. तो हमारे आसपास हमारे देखकर हमें क्या विचार चल रहा है और हमारे क्या विचार आगे होने वाले हैं, ये निर्भर करता है हमारे संग पे. You see, Akrura, he was able to understand that Supreme Lord Shri Krishna is Supreme Lord, and he was able to understand this because of association with Krishna. अक्रूर ये समझ पाए कि श्री कृष्ण परम भगवान है, और वह ये समझ पाए इस कारण से क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण का संग किया. Supreme Lord is Shudham and Apapavidham. Shudham means he is purest, and Apapavidham means that sin cannot touch him. परम भगवान शुद्धम है और अपाप विद्धम है. शुद्धम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, और अपाप विद्धम कि उनको पाप स्पर्श नहीं कर सकता. And it means that everyone who comes in contact with Supreme Lord Shri Krishna becomes purified. और इसका अर्थ यह भी है कि जो भी श्री कृष्ण के कांटेक्ट में आता है वो शुद्ध हो जाता है. And we have holy name of Krishna. We have Hare Krishna Mahamantra, which is non-different from Krishna. तो हमारे पास भगवान का पवित्र नाम है
वह हरे कृष्ण महामंत्र है जो भगवान से अभिन्न है. We have Sri Bhagavat Prasadam, which is also not different from Krishna. हमारे पास भगवान का प्रसाद है जो भगवान से अभिन्न है. We also worship Archa Vigraha. Archa Vigraha. We worship deities that are also non-different from Supreme Personality of Godhead Shri Krishna. हम अर्च विग्रह की भी पूजा करते हैं जो भगवान परम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है. And we read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and Krishna's message from Bhagavad Gita is not different from Krishna. हम श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, वह भी श्री कृष्ण से अभिन्न है. And Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, which is written by Vyasadeva, who is incarnation of Supreme Lord. So this Bhagavatam is also divine, also transcendental, also non-different from Supreme Personality of Godhead. श्रीमद् भागवतम जो कि भगवान के साहित्यिक अवतार श्री व्यासदेव ने लिखी है, वह भी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है और दिव्य है. And it means that when we deal with all these manifestations of Krishna's mercy, we also become purified. और जब हम इन भगवान की कृपा के रूपों से स्पर्श में आते हैं तो हम भी शुद्ध हो जाते हैं. But this process of purification is quite gradual. और ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है ये क्रमशः होती है. In order to get fruit of this purification, one should be stable in his practice. Stable means it should be done on a regular basis. Nitya Bhagavata Sevaya. इस शुद्धिकरण का फल प्राप्त करने के लिए हमें अपनी साधना में स्थिर होना होगा, हमें इसे नित्य रूप से करना होगा. We live in Kali Yuga, and this atmosphere of Kali Yuga is very contaminating. जो कलियुग का वातावरण है वो बहुत ही दूषित है. So it means that we are not only influenced by these manifestations of Krishna's mercy, but we also are influenced by different circumstances and aspects of our day-to-day life to which we are accustomed for. तो इसका अर्थ ये है कि हम ना कि सिर्फ श्री कृष्ण के रूप से प्रभावित हैं, बल्कि हम नाना प्रकार के प्रदूषण से भी प्रभावित हैं जो हमें अपनी रोजमर्रा की काम में सामना करना पड़ता है. So it is nice when a practitioner, bhakti practitioner, devotee is trying to spiritualize different aspects of his day-to-day life. तो ये हमें तब आभास होता है जब एक साधक अपने जीवन के विभिन्न अंगों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना प्रारंभ करता है. Means we should create nice conditions to chant Hare Krishna, nice conditions to means environment to read Srila Prabhupada's books and all these things. Nice. Conditions, environment. तो हमें अपने वातावरण में उसको शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए. हमें भगवान के नाम के बारे में विभिन्न बातों को लगाना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि को भी लगाना चाहिए. Otherwise, someone's spiritual life will be like there is one proverb, like one step forward and two steps back. वरना हमारा आध्यात्मिक जीवन ऐसा हो जाएगा जैसा कि मुहावरे में कहा जाता है कि एक कदम आगे और दो कदम पीछे. So that's why what we should do in order not to have our spiritual practice or our spiritual life to be in such way, like we do one step forward and then we do two steps back, we should practice not only anukulyasya sankalpah, to accept what is favorable for devotional service, but with great determination we should practice pratikulyasya varjanam, to reject what is unfavorable. तो हमें क्या करना होगा कि हम इस चक्कर में ना फंसे कि हम एक कदम आगे बढ़े और दो कदम पीछे आए. हमें ना सिर्फ अनुकूल से संकल्प, हमें ना सिर्फ वह स्वीकार करना होगा जो भक्ति के अनुकूल है, परंतु हमें पूर्ण दृढ़ता से वह भी नकारना होगा, उसको घटाना भी होगा जो भक्ति के प्रतिकूल है. प्रतिकूल से वर्जनम, उसको. Otherwise, practitioner will be easily dragged back to his to the ocean of material existence. वरना साधक वापस खींचा जाएगा भव सागर की तरफ.
Hare Krishna. So here the example is given that Akrura was influenced by Supreme Lord Shri Krishna, and because of that he could understand that Supreme Lord Shri Krishna is Supreme Lord Shri Krishna. तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि अक्रूर प्रभावित हुए श्री कृष्ण से और उस कारण से वह समझ पाए कि श्री कृष्ण परम भगवान है. The similar situation took place when Dhruva Maharaj was meditating according instructions of Narada Muni, and suddenly Supreme Lord appeared before Dhruva Maharaj and touched his head with his conch. ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई जब ध्रुव महाराज भगवान पे ध्यान लगा रहे थे नारद मुनि की शिक्षाओं के अनुसार, और श्री भगवान अकस्मात ही वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने अपने शंख को ध्रुव महाराज के सिर से स्पर्श कराया. Dhruva Maharaj was small boy, but because of that touching of the conch to his head, he was able to compile nice and amazing prayers. ध्रुव महाराज एक छोटे बालक थे, परंतु उस शंख के स्पर्श के कारण वह अति सुंदर प्रार्थनाएं भगवान के लिए अर्पित कर पाए. श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. So in today's verse it is told that all amazing things on the earth, in the sky, in the water, that we can see, all amazing things comes from Supreme Personality of Godhead. तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं कि समस्त पृथ्वी, आकाश तथा जल की सारी अद्भुत वस्तुएं श्री भगवान से आती हैं. ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम. Supreme Lord Shri Krishna सर्व कारण कारणम. He is cause of all causes. Everything comes from him. तो परम भगवान श्री कृष्ण सब कारणों के कारण हैं, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है. So it is a nice practice or nice habit when we see something amazing to remind ourselves that it is related to Shri Shri Radha Radhika Raman. तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है कि हम ये प्रयास करें कि जब भी हमें कुछ सुंदर दिखता है, कुछ अच्छा दिखता है, तो हम वो समझें कि वह श्री श्री राधा राधिका रमन से संबंधित है. It doesn't happen by itself. ये अपने आप नहीं होता. Like materialistic scientists, they can say everything happens by itself. जैसा कि भौतिकवादी वैज्ञानिक कहते हैं कि सब कुछ अपने आप होता है. Everything happens because of a big bang, and big explosion happened by chance. सब कुछ हुआ क्योंकि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और ये ऐसे ही संसार उत्पन्न हो गया. And all these things. और ऐसी चीजें. So, but nothing happens in this world without reason. कुछ भी इस संसार में बिना कारण के नहीं होता. Everything has its reason. हर चीज के पीछे एक कारण है. And the reason is Krishna. और वह कारण है श्री कृष्ण. Shri Krishna, yes, Shri Krishna. And so we can try to develop this habit that when we see something amazing, it is not just combination of molecules and atoms. It is related to Supreme Lord, not just abstract Supreme Lord, but with particular Supreme Lord. It depends to which ISKCON temple you are connected. It can be Shri Shri Radha Radhika Raman or Shri Shri Radha Partha Saradhi, whatever you, and we can meditate on particular deity. तो हमें अभ्यास करना होगा कि जब भी हमें कोई सुंदर वस्तु दिखती है तो हम ये प्रयास करें स्मरण करने का कि ये श्री भगवान से संबंधित है. और श्री भगवान का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वेग नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो है कि वो आप जिस मंदिर से कनेक्टेड है उस पर डिपेंड करता है. वो श्री श्री राधा राधिका रमन हो सकते हैं और श्री श्री राधा पार्थसारथी भी हो सकते हैं. But of course it is not sufficient just to understand that what amazing things we are able to see around us, it is related to Krishna. It is not sufficient because it is just Shantarasa. तो ये
बहुत अच्छा है, परंतु पर्याप्त नहीं है कि हम हर वस्तु को देख के उसको भगवान से संबंधित माने, क्योंकि यह सिर्फ शांत रस तक है. Shantarasa means I observe what's going on around me and I understand that Supreme Lord is great, and but there is no Dasya Rasa yet, means there is no idea that I should serve to this Supreme Absolute Truth. तो शांत रस का अर्थ है कि मैं अपने आसपास की वस्तुओं का निरीक्षण करता हूं और मैं समझता हूं कि भगवान बहुत महान है, तो इसमें कोई सेवा का भाव नहीं है, इसमें दास्य रस नहीं है. But when Sri Chaitanya Mahaprabhu came to this planet 500 years ago, he was propagating exactly this idea that you serve Supreme Personality of Godhead, and he was showing this on his own personal example. परंतु जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले यहाँ पे अवतरित हुए तो उन्होंने दिखाया कि हमें भगवान की सेवा करनी है, और उन्होंने यह अपने स्वयं के उदाहरण से स्थापित किया. That's why we call Supreme Lord, we call Lord Gauranga to be Chhana Avatara or hidden Avatara. इसलिए हम श्री चैतन्य महाप्रभु को छन्न अवतार कहते हैं. He was not saying I am Supreme Personality of Godhead. वो नहीं कह रहे थे कि मैं परम भगवान हूँ. He was not saying Sarva Dharman Parityaja Mamakam Sharanam Vraja. He was not saying like this. वे नहीं कह रहे थे कि आप सारे धर्म छोड़ के मेरी शरण में आओ. He was saying Gopi Bartur Padakamayor Dasa 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 Anudasa. वे कह रहे थे कि हमें बनना है गोपियों के दास के दास के दास के दास के दास. It is the law of Kali Yuga that it is better for Supreme Lord to come in the form of his own devotee than in the form of Supreme Lord himself. ऐसा कलयुग में होता है कि भगवान अपने सेवक के रूप में आते हैं. Because in Kali Yuga there are so many personalities, so many persons who want to claim that they are Supreme Personalities of Godhead. क्योंकि कलयुग में इतने सारे लोग हैं जो सब कहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ. And one of our preachers, senior preachers in Russia, he told that once there was a big congress of Jesus's crisis. तो हमारे एक रशिया में वरिष्ठ प्रचारक एक बारी बता रहे थे कि एक बारी बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें बहुत सारे जीसस क्राइस्ट आए थे. And but they didn't told where it was. Maybe it was in one of European countries, maybe in US, well, but not in Russia, that's for sure. तो उन्होंने ये बताया नहीं कि ये कहाँ पे हुआ था. शायद किसी बड़े देश में हुआ होगा, रशिया में तो नहीं हुआ था, शायद अमेरिका में हुआ होगा. So the idea was just together and to come to the conclusion who between all these people who consider themselves to be Jesus's crisis, who is real and who is fake. तो उस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि सारे जीसस क्राइस्ट को इकट्ठा किया जाए और ये निर्णय किया जाए कि उन सब लोगों में से जो सब अपने आप को जीसस क्राइस्ट मानते हैं, असली में जीसस क्राइस्ट कौन है. And looks like they didn't come to final conclusion. और प्रतीत होता है कि वह किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे. Because you see, when big congress is going on, usually they write some kind of manifest or whatever, and they sign this document that we agree, but there was no such manifest. तो साधारणतः जब कोई ऐसे सम्मेलन होते हैं तो वो एक पर्चे पे लिखते हैं कि हमने ये निष्कर्ष निकाला, उस पे साइन करते हैं, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं. So this tendency to consider oneself to be Supreme Personality of Godhead is there, especially in Kali Yuga, in this age which is not dharmic age. It is the age of quarrels and conflicts. तो ये प्रवृत्ति अपने आप को भगवान मानने की ये कलयुग में हमें विशेषतः दिखती है. कलयुग अधर्म का युग है जिसमें लोग क्वारल और हिपोक्रेसी, कपट में लगे रहते हैं. That's why in this age Supreme Lord comes as Lord Gauranga and he presents himself as his own devotee. तो इसीलिए इस युग में भगवान अपने सेवक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं और वो अपने आप को अपने भक्त की तरह प्रस्तुत करते हैं. And by mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, by mercy of Acharyas, by mercy of Srila Prabhupada, we have Vaishnava Association. और श्री चैतन्य महाप्रभु, आचार्यों और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारे पास वैष्णवों का संघ है.
we have people who decided, let me also try to become Krishna's servant. Let me also try to become servant of Krishna. तो हमारे पास ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने ये सोचा है कि मैं प्रयास करता हूँ भगवान के दास के दास के दास के दास का दास बनने का. So it is the art of preaching, how to make this idea to become dasa, anudasa, to this idea to be attractive for people. तो प्रचार का अर्थ है कि हम लोगों के लिए ये जो विचार है कि भगवान के दास का दास बनना है, इसको आकर्षक बनाए. Because you see, usually we have huge experience in material world when we try to serve to someone or we try to serve to some ideas or ideologies, and the result is all the same. We feel ourselves to be exploited. तो भौतिक जगत में हमारे ऐसे बहुत से अनुभव हैं कि जब हम ऐसे विचार को प्रस्तुत करते हैं तो लोग समझते हैं और लोगों का ये अनुभव होता है कि उनका शोषण किया जाएगा. And now one more person comes and he says, you serve Supreme Lord Shri Krishna and you chant these holy names. और अब एक और व्यक्ति हमारे पास आ जाता है जो हमें कहता है कि आप भगवान के दास बन जाइए और उनका नाम लीजिए. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And someone can say from that audience to whom preacher addresses, someone can say, is it compulsory to serve Supreme Lord? Is it compulsory? जो लोग इस प्रचारक को सुन रहे होंगे उनमें से कोई कह सकता है कि क्या भगवान की सेवा करना अनिवार्य है? Yeah, are we? Why we are forced to do this? Why are you forcing us to do this? तो आप हमें ये करने में जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? And the answer is, Supreme Lord Shri Krishna already has sufficient quantity of servants in spiritual world. तो इसका उत्तर है कि परम भगवान श्री कृष्ण के पास प्रचुर मात्रा में सेवक हैं आध्यात्मिक जगत में. He is not lacking servants, but it is your privilege to serve him if you will choose to this path of Bhakti Yoga. तो उनके पास सेवकों की कमी नहीं है, परंतु ये आपका सौभाग्य होगा अगर आप उनके सेवक बन जाएं भक्ति योग को स्वीकार करके. And Sri Chaitanya Mahaprabhu in this bhajan Jiv Jago Gaura Chandra Bole, he says, where you can find a better master for yourself. I'm your well-wisher and I'm your master, and you cannot find a better master anywhere. तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस भजन में जीव जागो गौरा चांद्र बोले, इसमें कह रहे हैं कि आपको मेरे से अच्छा प्रभु कहाँ मिलेगा. मैं आपका परम सुहृद हूँ और आपका प्रभु हूँ. So anyway, living entity Jivatma is part and parcel of Supreme Lord, and when this part and parcel of Supreme Lord decided to go to material world, anyway this option that Jivatma is part and parcel of something. Now, because Jivatma is in material world now, Jivatma doesn't remember of what he or she is part and parcel of. But anyway, still this Jivatma remains to be part and parcel. तो जीवात्मा श्री भगवान का अंश है, और इस जीवात्मा ने जब भौतिक जगत में आने का विचार किया और वो जब यहाँ आया तो वह भूल गया कि वह भगवान का अंश है. And because of that eternal nature of Jivatma, that Jivatma is part and parcel, actually part and parcel of Krishna, but because of this forgetfulness, Jivatma in material world is trying to become part and parcel of different things, of different ideologists, different groups of people, different things of this material world, because there is variety in this material world. तो इस विस्मृति के कारण कि वह भगवान का अंश है, वह अन्य चीजों का अंश बनने का प्रयास करता है. कभी वह किन्हीं विचारधाराओं का अंश बनने का प्रयास करता है, कभी किन्हीं समाजों का अंश बनने का प्रयास करता है, विभिन्न चीजों का. But Jivatma should be connected back to Supreme Personality of Godhead Shri Krishna as his servant, otherwise this feeling of incompleteness always will be there.
परंतु जीव आत्मा को हमें जोड़ना होगा परम भगवान श्री कृष्ण से। अगर हम ये नहीं करते तो यह खालीपन हमेशा रहेगा। And people are trying to become free from this feeling of incompleteness in different ways. Some people, we have 4 regulative principles, and it is actually to break regulative principles. It is sinful and karmic way how to when people they try to become free from this feeling of incompleteness. For example, by taking some intoxicants, some drugs, and it makes people forgetful who they are, and because of that they don't feel themselves incomplete, at least for some period of time. तो ये खालीपन को दूर करने के लिए जीवात्मा बहुत से प्रयास करती है। जैसा कि हमारे पास 4 नियम हैं, यही चारों नियम को तोड़ने के माध्यम से, जैसे कि कभी वो नशा करते हैं, कभी मांसाहार, कभी व्यभिचार, और इस कार्य में संलग्न होने से वह कुछ समय के लिए अपने खालीपन को भूल जाता है। And some people are trying to find their happiness in mundane love and sexual intercourse. और कुछ लोग अपनी ये प्रसन्नता ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं भौतिक प्रेम और संभोग में। And they hope that because of that this feeling of incompleteness will go away and eternal happiness will be there. वह ये सोचते हैं कि इससे ये खालीपन चला जाएगा और मुझे सनातन खुशी मिलेगी। But Krishna breaks this illusion in Bhagavad Gita by saying that this material world is dukkhalayama shashvatam. परंतु कृष्ण इस मोह को तोड़ देते हैं, इस भ्रम को तोड़ देते हैं भगवद गीता में यह कहकर कि जगत दुखालय है और अशाश्वत है। Dukkhalayam ashashvatam. Dukkhalayam means full of miseries, and ashashvatam means that everything is temporary in this world. दुखालयम का अर्थ है कि यहाँ पे सब कुछ दुखों से भरा है, और अशाश्वत का अर्थ कि सब कुछ अशाश्वत है। Ashashvatam means temporary, and it means that these miseries, dukkhalayam, they are also temporary in the sense that now you experience one kind of miseries, and after some time you will be experiencing another kind of miseries. So again, even if we are speaking about miseries, there is variety. अशाश्वत का अर्थ ये है कि जो दुख भी है यहाँ पे वह भी अशाश्वत हैं। तो आपको पहले एक प्रकार का दुख झेलना होगा, फिर दूसरे प्रकार का, फिर तीसरे प्रकार का। इसका अर्थ ये है कि दुख में भी विभिन्नताएं हैं। There is variety of miseries also here. यहाँ पे दुखों में भी विभिन्नताएं हैं भौतिक जगत में। But what one should not be attracted by this variety. One should be attracted by variety which is presented in spiritual dimension, in spiritual abode. तो हमें इन विभिन्नताओं से आकर्षित नहीं होना है, हमें उन विभिन्नताओं से आकर्षित होना है जो आध्यात्मिक धरातल पर हैं। There is creation and material dimension. It is about 25% of this creation, and other 75% of this creation is spiritual abode, spiritual world. तो ये भौतिक सृष्टि जो है ये पूरी सृष्टि का 25% है, और जो आध्यात्मिक सृष्टि है वह 75% है। So when Devahuti approaches her son Kapila Dev, she says to Kapila Dev, "You are my transcendental eye." तो देवहूति जब कपिल देव के पास जाती हैं तो वे कपिल देव से कहती हैं कि आप मेरी दिव्य आंखें हैं। You are my transcendental eye, in the sense that you give the spiritual instructions, and by your mercy in the form of these instructions, I am able to see things as they are. तो दिव्य आंख का अर्थ ये है कि आप मुझे दिव्य आज्ञाएं देते हैं, और उन आज्ञाओं की कृपा से मैं दिव्य अनुभव, दिव्य चीजें देख पाती हूँ। So it is actually the path to the eternal happiness, or to any, there are different kinds of happiness in different modes of material nature. But anyway, if we are speaking about eternal happiness, spiritual happiness, we can get it from these spiritual instructions by meditating on these instructions and by following these instructions. तो यह रास्ता है आध्यात्मिक आनंद का। तो हम जब इन आध्यात्मिक शिक्षाओं पर ध्यान लगाते हैं और इनका पालन करते हैं तो हम आध्यात्मिक आनंद की ओर बढ़ते हैं। Everything starts from our perception, from our vichar, or how do we perceive this world around us.
सब कुछ प्रारंभ होता है हमारे विचारों से कि हम आसपास के जगत को कैसे देखते हैं. Usually people, when they are not satisfied with different aspects of their lives, they are just trying to change something externally. तो लोग जब अपने परिस्थितियों से असंतुष्ट होते हैं तो वो बाह्य रूप से कुछ बदलने का प्रयास करते हैं. But our approach is the opposite approach. We first of all should change our perception of what's going on around us, and only after this we can take proper decision of what should we do. तो हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों को देखने का तरीका बदलना है, हमें अपने विचार को बदलना है और फिर हम शुद्धिकरण की तरफ बढ़ेंगे. This transcendental eye is given to us in form of Srila Prabhupada's books. तो ये दिव्य आँख हमें दी गई है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से. And now it is just up to us, are we going to use this transcendental eye or not? Are we going to look on the world around us through these glasses given to us by Srila Prabhupada or not? तो अब ये हमारे ऊपर है कि क्या हम इन दिव्य आँखों के द्वारा इस जगत को देखना चाहते हैं, इस चश्मे के द्वारा या नहीं. And if we read Srila Prabhupada's books regularly, then we perceive this world in different way, different from the way how people usually perceive this world and their lives. तो अगर हम इन श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को नित्य रूप से पढ़ेंगे तो हम इस दुनिया को दूसरे नजरिए से देख पाएंगे, उस नजरिए से अलग जिससे लोग इस दुनिया को साधारणतः देखते हैं. And once one temple president, Srila Prabhupada's disciple, he approached Srila Prabhupada and he told, so many troubles, so many problems I have in this management, this problem, that problem. तो एक बारी एक मंदिर के अध्यक्ष श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद के पास गए और वो कहते हैं मेरे पास इतनी सारी समस्याएं हैं, इतने कष्ट हैं इस प्रबंधन में. It is natural because the more responsibility you have, the more problems you have to deal with. तो ये तो स्वाभाविक है कि जितनी आपके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी उतनी समस्याओं को आपको झेलना पड़ेगा. But the more responsibility one has, the more mercy one can get. परंतु जितनी ज्यादा जिम्मेदारी आप लेंगे उतनी ज्यादा कृपा भी आपको मिलेगी. Of course, if he is able to handle with all these situations. परंतु ये आपके पास शक्ति होनी चाहिए कि आप सारी समस्याओं को संभाल पाएं. Translated, yeah, translated. तो मगर ये आपके व्यक्ति के पास शक्ति होनी चाहिए कि वो सारी समस्याओं को संभाल भी सके. So this devotee, he told Srila Prabhupada about different problems in his temple, and Srila Prabhupada asked him, "Do you read Bhagavad Gita?" तो इन भक्त ने श्री प्रभुपाद को ये सारी समस्याओं के बारे में बताया और प्रभुपाद ने उनसे पूछा क्या आप भगवद गीता पढ़ते हैं. And the devotee told so many problems, I have no time to read Bhagavad Gita. तो उन्होंने कहा मेरे पास इतनी सारी समस्याएं हैं, मेरे पास भगवद गीता पढ़ने का समय नहीं है. And Srila Prabhupada told them, now because you came here for a few days, you are on vacation, you have some time, you just go and read Bhagavad Gita. तो प्रभुपाद ने उनसे कहा कि आप यहाँ पे आए हो तो आपके पास छुट्टी का समय है, 4-5 दिन आपके पास कुछ खास करने को नहीं है, तो आप भगवद गीता पढ़िए. And after some time we will meet and we will discuss these problems. तो और फिर कुछ समय बाद हम मिलेंगे और इन समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे. And so then Srila Prabhupada met that devotee after about 2 days and he asked him, so what about your temple and what about the situation in your temple about all these problems? तो 2 दिन बाद श्रील प्रभुपाद उनसे फिर से मिले और उनसे पूछा कि आपके मंदिर के बारे में आप बताइए और जो सारी समस्याएं थी उसके बारे में बताइए. And the temple president told, what problems? I don't remember problems. तो मंदिर के अध्यक्ष ने उन्होंने कहा कौन सी समस्या है, मुझे कोई समस्या याद नहीं है. So if one is not so much overwhelmed by problems that he has, it means, of course, it doesn't mean that we should ignore problems, but anyway, if one emotionally is not so much involved in that, then it is easier for him to take proper decisions and to handle with these things. तो अगर एक व्यक्ति इन सारी भावनाओं से आप्लावित नहीं होता तो वह निर्णय ले सकता है.
So that's why this process of Shravanam is really important. इसीलिए ये श्रवण की विधि बहुत महत्वपूर्ण है. And what is a typical procedure which a book distributor follows before going on Sankirtan on book distribution? Usually he has to have nice Mangala Arati and he has to be focused, and it is also recommended for him to listen some classes in headphones, to listen some classes, Srila Prabhupada's classes or whatever, any ISKCON, authoritative ISKCON speaker classes, just in order to be inspired, in order to be tuned in proper way. तो एक साधारण विधि क्या है एक व्यक्ति के लिए जो प्रचार के लिए बाहर जाता है पुस्तक वितरण पे, उसको मंगल आरती अच्छे से करनी है, उसको हमेशा दृढ़ रहना है, उसको श्रील प्रभुपाद की कक्षाओं या अन्य प्रामाणिक वक्ताओं की कक्षाओं का श्रवण करना है. So it is the art to be focused. यह कला है हमेशा दृढ़ रहने की, फोकस्ड रहने की. Yeah, like we have this book written by Gauranga Prabhu, which is called Art to be Focused or something like this. गौरांग प्रभु की एक पुस्तक है जिसका नाम है आर्ट ऑफ फोकस. Otherwise, so many things, there are so many things, but by these things we can be easily distracted. ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जिनके द्वारा हम आसानी से अपने ध्यान को खो सकते हैं. And one can start from very simple things. For example, if one is on Bhagavatam class, or if one chants his rounds of Hare Krishna Mahamantra, one can take as a rule that I'm going to switch off my mobile, my smartphone for that period of time when I sit on the class, on Bhagavatam class, or when I chant my rounds, just in order to be focused. तो ये बहुत आसान है, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से इसका शुरुआत कर सकते हैं. हम अगर भागवतम क्लास में बैठते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि हम भागवतम क्लास में बैठेंगे अपने फ़ोन को ऑफ करके. हम जब बैठते हैं तो हम बैठेंगे अपने फ़ोन को ऑफ करके. Everything starts from very small things, like we have this Chinese proverb, which I don't know how to say in English, but the idea is that the idea is that big journey starts from small step. तो हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों से ही शुरुआत की जाती है हर चीज़ की. तो एक चाइनीज़ मुहावरा है जो मुझे बोलना तो नहीं आता, मगर उसमें कहा यह गया है कि एक लंबी दौड़ छोटे कदमों से शुरू होती है. So the same way, if we are speaking about the process of purification our senses, we can start from easy and small things, like just to take prasadam, for example, which we are going to do now. तो जब हम अपनी इंद्रियों के शुद्धिकरण की बात करते हैं तो वे सरल और छोटी चीज़ों से प्रारंभ किया जा सकता है, जैसे कि प्रसाद पाना, जो भी हम करने वाले हैं. It is about purification of the senses. If to speak about how to be focused, we just can take as a rule that when we are on the class or when we chant our rounds, better to have our mobile to be switched off. तो ऐसे ही जब हम और अपने लिए एक नियम बना सकते हैं कि जब हम भागवतम में बैठे या जब के समय बैठे तो हम फोन को ऑफ करें. Big journey starts from small step. सारी यात्राएं छोटे कदमों से शुरू होती हैं. It means that sometimes some new devotees, new people, they can be impressed or even scared by when they start to understand how much endeavors and time and energy and so on they have to put in order to achieve perfection in spiritual life. तो शुरू में एक कोई जो व्यक्ति है वह बहुत डर सकता है इस बात को सुन के कि कितना प्रयास चाहिए भगवान की भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए. But we can just we should not be scared by this. We should be just here and now, and we should just do what depends on us and what can we do, and we can start from these easy things. The most important is to do it regularly. तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें देखना चाहिए अभी हम यहाँ पे इस समय पर हैं, तो जो हमारे लिए संभव है वो हमें प्रयास करना चाहिए, परंतु हमें वह नित्य रूप से करना चाहिए. Hare Krishna. हरे कृष्ण. If we have some questions, then let's discuss these questions. तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम उन पर चर्चा कर लेते हैं. Yes. The question from His Grace Ramapriya Prabhu. Thank you.
Thank you, Prabhu. Krishna. Very nice class. So, very deeply you were discussing the philosophy of purification, and you were telling about part and parcel of Krishna, that we should understand that we are spirit soul and we are part and parcel of Krishna. Otherwise, we will try to find that part and parcel in other things, right? But even while practicing devotional service, it takes time to get to this realization. So, Prabhu, I would like to hear from you that what are some steps we can take so that we can more nicely realize this part and parcel. Yeah. Okay. Can you speak in Hindi as well? Thank you. प्रभु, आपने बताया क्लास में कि मतलब हम कृष्णा के अंश हैं और हम इसको नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम दूसरी चीज़ों का अंश में खुशी ढूंढते हैं. लेकिन ऐसा होता है कि भक्ति करते हुए भी हम ये नहीं रियलाइज कर पाते कि हम कृष्णा के अंश हैं. तो क्या हम कर सकते हैं जिससे ये रियलाइजेशन और स्ट्रांग हो? There is one nice Vedic story about this. तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी आती है. There was one farmer and he was working on the field and he was serving to his master, to his malik. तो एक बार एक किसान था, वह अपने खेत पे काम कर रहा था और वह अपने मालिक की सेवा कर रहा था. After some time he have seen that there is one person who comes to this malik and takes money from him. तो उन्होंने कुछ समय बाद ये देखा कि एक व्यक्ति इस मालिक के पास आता है और उनसे पैसा ले जाता है. So this farmer asked, who is this person? तो इस किसान ने पूछा उनसे कि ये व्यक्ति कौन है. And Malik told that this person comes to take taxes from me. मालिक ने ये बताया कि ये व्यक्ति मेरे से टैक्स कर लेने आता है. Does it mean that this person is greater than you? Yes. Can I go and serve him? Yes. तो क्या इसका मतलब है कि ये व्यक्ति आपसे महान है, तो क्या मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ? हाँ, जाओ. So with permission of Malik, this farmer went to this person who is taking taxes. By the way, how we call these people who are taking taxes in English? Anyway, he came to this person and he started to serve him. तो फिर ये किसान उस व्यक्ति के पास चला गया जो कर वसूलने आता था और उसकी सेवा करने लगा. After some time, he have seen that this person bows down before a king. तो ये कुछ समय बाद इस व्यक्ति ने देखा कि ये किसी दूसरे व्यक्ति के सामने झुकता है. And with permission of that person whose occupation was to take taxes from other people, he started to serve king. He went to his palace and he was living in this palace and he was serving to that king. तो फिर उसने उस व्यक्ति से अनुमति मांगी जो कर वसूलने आया करता था कि क्या मैं उस व्यक्ति की सेवा कर सकता हूँ जिसके सामने आप झुकते हैं. तो फिर वह उस महल में जाने लगा जहाँ पे वो व्यक्ति रहता था और उनकी सेवा करने लगा. Nice career, right? Nice career. ये अच्छा आइडिया है ना. But it is not the end, because after some time this farmer could see that king bows down before Brahmana. परंतु यहाँ पे इसका अंत नहीं होता है. तो क्योंकि फिर वो देखेगा कि ये जो राजा है ये परब्रह्म के आगे झुकता है. Because that Brahman was Guruji. Sorry, ब्राह्मण के आगे झुकता है. Brahmana was Guruji of that king. तो ब्राह्मण जो थे वो उस राजा के गुरु थे. And so then that farmer started to serve that Brahmana, and then he saw that Brahmana serves to the deity, and then he started to serve the deity. तो फिर वह किसान उन ब्राह्मण की सेवा करने लग गया और फिर उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण अर्च विग्रह के सामने झुकते हैं. फिर उसने अर्च विग्रह की सेवा करनी शुरू करी. And why this Hare Krishna, why this farmer was able to make such nice career? Because he was always asking that question, is that person greater than you or not? तो यह किसान प्रगति क्यों कर पाया? क्योंकि हमेशा वह यह प्रश्न पूछ रहा था कि वह जो व्यक्ति है वो क्या आपसे महान है? So the intention to serve to something great is nice. तो किसी महान व्यक्ति की सेवा करना, ये जो वृत्ति है ये अच्छी है.
And if we will study this subject matter carefully, we will understand that Supreme Lord Shri Krishna is the greatest. और इसके ऊपर हम जब अच्छे से विचार करेंगे और अध्ययन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सबसे महान परम भगवान श्री कृष्ण है. Srila Prabhupada told that it is not sufficient to know that Supreme Lord is great, but it is needed to know how he is great. तो श्री प्रभुपाद कहते थे कि यह जानना पर्याप्त नहीं है कि परम भगवान महान है, हमें यह भी जानना होगा कि वे कितने और कैसे महान है. And his greatness and glory is described in sacred scriptures. तो उनकी जो महानता है वह बताई गई है शास्त्रों में. So Srila Prabhupada, he told that I am writing these books, I am translating these books, and what is the purpose? The purpose is to inspire you more to chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare तो Hare. प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि मैं ये सारी पुस्तकों को अनुवाद कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ भगवान का नाम लेने के लिए. On each and every page of these books you can find these statements that Supreme Lord Shri Krishna is the greatest. इन पुस्तकों के हर पृष्ठ पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि परम भगवान श्री कृष्ण सबसे महान है. And how great he is, and what are aspects of his greatness, and what are his qualities, and all these things. और वे कितने महान हैं और उनकी महानता के कार्य, उनकी महानता की गुणवत्ता हमें मिलेगी हर जगह. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Okay. Thank you, bro. Hare Krishna. Do we have time for questions, or should we stop the class? What should we do? We can take if somebody has. Okay. Do you have questions? Do you have questions? Huh? Grantarat Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. His Grace Hare Madhav Krishna. Murari Prabhu ki jai. Krishna.